Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, today we are going to start chapter number 4, and the name of our chapter is Environmental Pollution. And today I am going to give you a complete introduction of this chapter. So my dear students, in this chapter, these are all the student learning outcomes that we will cover. ये parents और teachers के understand करने के लिए है कि जब ये हम chapter cover करेंगे तो बच्चे ये तमाम points जो हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से understand कर लेंगे. So my dear students, let's quickly start. So in this chapter, one of the greatest problem that the world is facing today is environmental pollution, which is causing irreparable damage to the earth. Pollution is also causing severe threats to life in many ways. Environmental pollution is a challenging issue for scientists as well as local and global authorities. In this chapter, the causes, impacts, and solution of different types of pollution have been discussed. So my dear students, pollution जो है ये एक बहुत बड़ा issue है आजकल की दुनिया में क्योंकि the world is growing so fast और इसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है. कितनी टाइप्स की पोल्यूशन होती है, इसके क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं, कैसे हम इसको कम कर सकते हैं. वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन लेक्चर नंबर 1 students will be able to define pollution and its types. The page that is included is page number 53. So सबसे पहले लेक्चर में हम pollution और इसकी types के बारे में डिस्कस करेंगे. Then in lecture number 2, students will be able to explain the main causes of water, air and land pollution. We will only discuss about air pollution and explain the effects of air pollution like unclean, toxic water, smoke, smog, excess carbon dioxide and other gases, open garbage, dumps, industrial waste, etc. on environment and life. So my dear students, air pollution जो है वो किस तरीके से cause होती है, हम सिर्फ air pollution के बारे में lecture number 2 में discuss करने वाले हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं environment में जो कि air pollution को ज़्यादा से ज़्यादा cause करी हैं, क्या impacts हैं, we will discuss that. Then my dear students, in lecture number 3 we will discuss about water pollution और इसी तरीके से water pollution के क्या क्या causes हैं, we will discuss that. Then we will move forward towards lecture number 4 and in lecture number 4 we will discuss about land pollution. So one by one हम तीनों types की जो pollution है हम उनके बारे में discuss कर रहे हैं, क्या क्या इनके causes हैं, क्या क्या impacts हैं, we will discuss that. And then in lecture number 5 we will discuss about the students will be able to explain the effects of burning fossil fuels and releasing greenhouse gases in the air. So my dear students, ऐसी कौन सी gases हैं जो global warming या अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर रही हैं. इसके अलावा फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से ये गैसेस जो है बहुत ज्यादा रिलीज होती हैं. वी विल डिस्कस दैट इन लेक्चर नंबर 5. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स लेक्चर नंबर 6 and students will be able to differentiate between biodegradable and non-biodegradable material. So my dear students, lecture number 6 में कौन कौन से materials biodegradable होते हैं जो degrade हो जाते हैं और कौन से non-biodegradable है जो कि खुद ब खुद जो हैं वो degrade नहीं होते. We will discuss that in lecture number 6. फिर हम lecture number 7 पढ़ेंगे and that is lecture 7A, यानी कि इसके दो parts हैं. तो part A में students will be able to explain the impact of explain the impact of non-biodegradable materials on environment. और फिर जो non-biodegradable material है उसका क्या environment पे impact होता है, we will discuss that in lecture 7A. Then in lecture 7B, students will be able to discuss the possibilities and suggest ways to reduce non-biodegradable materials. So lecture 7B में बच्चे जो हैं वो क्या डिस्कस करेंगे, वो ये पॉसिबिलिटीज और सजेस्ट कर सकेंगे मुख्तलिफ वेज जिनसे हम बायोडिग्रेडेबल मटीरियल को कम से कम इस्तेमाल करें बिकॉज it does not have a positive effect on the environment. Then in lecture number 8 that will be the review of the chapter. तो इसमें हम तमाम कॉन्सेप्ट्स को एक दफ़ा रिवाइज करेंगे. देन आई विल प्रोवाइड यू विद एन असेसमेंट शीट और असेसमेंट शीट से मैं एवेल्युएट करूंगी कि बच्चों ने क्या कुछ सीखा है. So this chapter will be a lot of fun because we are going to learn a lot of things from this chapter. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.